हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो एमएचलॉसिटी 5 2023 एग्जाम पेपर हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्सेज दिए। पेपर वाज टू इजी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये कमेंट में भी मेंशन किया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द बी एडुकेयर मॉक टेस्ट एंड आल्सो फ्रॉम द कंटेंट फ्रॉम द रिसोर्सेज। सो गाइस, 5 इयर्स एमएचलॉसिटी 2023 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स to please mention the questions whichever you can memorize, पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, सो एक्चुअल जो कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो है वो मैं आपके सामने ला सकूं। ओके, सो 20 अप्रैल स्लॉट 1 के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। कुछ कुछ जरूर याद है, कुछ स्टूडेंट्स को याद है, कुछ आपको भी जरूर याद होंगे। ओके, सो वेरी फर्स्ट वन, सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्लॉट 1। नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जीके ऑलमोस्ट हमेशा हमें याद रहते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, याद ही रहेगा, राइट? स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज, बहुत इजी क्वेश्चन, जियोलॉजी। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, दैट इज बिहार। और यहां बात की गई है डेंसिटी की। ओके, मोस्ट पॉपुलस होगा देन इट विल बिकम यूपी। ओके, हाईएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा। अब ये सिक्किम में भी है, नेपाल में भी है, इंडिया में भी। ओके, सो ये जो पीक पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है, कंचनजंगा। लक्षद्वीप हाईकोर्ट जुरिस्डिक्शन कहाँ आता है? केरला हाईकोर्ट के अंडर। ओके, झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच स्टेट? फ्रॉम द बिहार। और ये कब हुआ था? 2000 में। ओके, दिस इज द साउथर्न पार्ट ऑफ द बिहार और इसीलिए ये सेपरेट हो चुका था 2000 में। एज लिमिट ऑफ हाईकोर्ट जजेस इज 62। ज्योति वेनम is related to which sport? Archery. Who was the head of drafting committee during the making of constitution? None other than डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एंड रवि कुमार दहिया, या टोक्यो ओलंपिक सबको याद रहेगा, सिल्वर मेडल रेसलिंग में। इन विच ह्यूमन बॉडी पार्ट इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड? पैनक्रियास, ऑलवेज रिलेटेड, राइट? अमृत्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज इन विच सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। और ये हमने क्लास में पढ़ा है। मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइड, नेम इटसेल्फ सेज public's opinion by voting. And headquarters of OPEC, Vienna, Austria. Founder of Brahmo Samaj or Brahman Samaj, Raja Ram Mohan Rai. Next, according to 2016 census, which was the most populous state in India? अब यहाँ देखो, यहाँ डेंसिटी की बात नहीं गई, यहाँ बात की गई है पॉपुलेशन की, सो इट विल कम यूपी, राइट? हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, न्यू दिल्ली। वो डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? अब यहाँ पेनिसिलिन वी जी, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑन हुज बर्थडे इज यूथ डे सेलिब्रेटेड? स्वामी विवेकानंद। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड मीनिंग ऑफ प्ले द फिडल, क्या आंसर होगा इसका? टू मूव द हैंड्स और फिंगर्स रेस्टलेसली। ओके गाइस, जो भी ऑप्शंस आए हैं आई थिंक कह सकता हूं कि आपने सही करेक्ट आंसर किए रहेंगे। 331, 442, 553, 664, वेरी इजी। एंटोनियम ऑफ लेविश, पार्सिमोनियस। लेविश लग्जरियस लाइफ, राइट? और पार्सिमोनियस stingy, cheap. Okay, so inquisitive means tending to inquire or investigate. And headquarters of Nation Human Rights Commission, as far as I said, New Delhi. Okay, so these all are the questions, guys. Most of the questions asked from the study material we provided and the mock test. And now there is a request. See, how was your paper? I asked most of the students, and they said most of the questions were from our mocks. So, guys, I hope same answers आपके भी होंगे। And if you remember some of the questions, then do mention in the comment section. And best of the luck for all the candidates who are preparing for slot 2. And guys, हो सकता है कि यहाँ से भी questions कुछ आ जाए। Okay, so remember all these questions and all the best. Thank you.